Hello students, good morning. Today's topic tree. It's so in my previous lecture where I also try to make you understand about this, but that part was theoretical part. In this lecture, I will try to make you understand how can we insert element after using a tree concept. Okay, so now let us start and try to understand about tree. As we know that tree is what? This is the nonlinear data structure, and in this case we can represent our elements in the hierarchical form. Okay, so here I would like to share the idea how can we represent our element. Yeah, how can we insert node after using a tree concept. Okay, tree concept means what? Here we can insert elements. Suppose if we have an element like 5, 10, 15, 20, 25. Okay, so as we know that because tree is the non-linear data structure, and here we cannot arrange this element, we cannot represent this element in the sequentially way in the linear form. In this case we need to arrange this element in the hierarchical form, hierarchical order. Okay, then definitely in this case here we need to create a node, that will the root node. यहाँ पे हम लोगों को नोड क्रिएट करना होगा जो कि हमारा क्या होगा, एक रूट नोड होगा. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट, हाउ कैन वी इंसर्ट द नेक्स्ट एलिमेंट इन दिस नोड. सो सिंपल, द एलिमेंट दैट विल present in the next for this element, we can arrange this like 10, 15, 20, 25, some element like 30, 35 like this. Okay, so how can we insert element after using this tree? Now notice over this. Simple, this is the program. We have this is the header file and using namespace std. Now I try to create the structure. उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, structure create करेंगे. So here we use a struct node. This is the keyword by which we can create node. This is what? This is the variable. Which types? Struct type. So this is the user defined data type. This will work as the user defined data type. ये कैसा work करेगा हमारा? तो user defined data type के जैसा work करता है. Okay. So here I create a variable जो कि हमारा struct type है. अब देखिए हमने जो ये वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्चर टाइप, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? एक डेटा, एक इन्फो एरिया होना चाहिए एंड टू वेरिएबल दैट विल रिप्रेजेंट योर लेफ्ट एंड राइट. ओके, जो कि हमारा एक पॉइंटर टाइप होगा. ये हमारा क्या होगा? एक पॉइंटर टाइप होगा दैट विल हेल्प्स यू टू पॉइंट योर node that will present at the left and at the right position. Clear? So simple, here I create the structure for this node. हमने structure तैयार किया इस node के लिए. Okay? Now the next part. Next क्या होना चाहिए? So again here I would like to create the constructor. The purpose is what? To construct your node to allocate, to reserve the memory location in your system according to our given value. Okay, so here I create a constructor. यहाँ पे हमने एक constructor create किया. As we know that here if I write a struct node, so node is what? This is variable, no doubt, but this is class name also. This is also the class name. We can use this as the class. हम लोग इसका यूज क्लास के रूप में कर सकते हैं. सिंपल सा फंडा है. इफ यू ट्राई टू यूज दिस कोड आफ्टर यूजिंग द जावा मेथड, देन सिंपल हियर वी कैन यूज दिस नोड एज द क्लास. हम वहां पर नोड का यूज एज द क्लास के रूप में करते हैं. ओके, सो हियर आई क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर नेम विल व्हाट? द सेम नेम ऑफ योर क्लास नेम. So here I use node, and in this case
इस नोड में ये जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, सो इस नोड में आखिर पास क्या करना है? वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड डेटा टाइप. सो हियर आई पास पैरामीटर जो कि हमारा वैल्यू है, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है. सो सिंपल हियर आई पास इंटीजर वैल्यू. हमने एक पैरामीटर पास किया where I would like to store this value. जहां हम क्या कर रहे हैं, आप नोटिस किए होंगे कि हमने स्ट्रक्ट नोड के इनसाइड एक डेटा वेरिएबल लिया था जो कि इंटीजर टाइप का था. अब हम यहां से जो भी वैल्यू पास करेंगे, दिस शुड बी स्टोर इनटू द डेटा वेरिएबल, जो कि हमारे डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए. तो सिंपल हियर आई यूज दिस वेरिएबल. डेटा वेरिएबल्स हमने यूज किया और जहां हम वैल्यू को कहाँ डाल दे रहे हैं? डेटा में डाल दे रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल व्हाट? सिंपल हियर आई असाइन लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू नल ptr. ओके, हमारा जो लेफ्ट है और राइट है इस नोड का, वो क्या है? फिलहाल नल है. According to our requirement, we can assign value. Okay, so now this is only the structure. Now if I try to insert value, अब अगर हम उस hierarchical shape में value को insert करना चाहते हैं, then in that case this is the variable node. Okay, this is the class variable, uh, and here I use the insert function. Okay, here I use the insert as the function where I try to pass the first one root, जो कि एक pointer type का है, node type data structure, sorry node type data type है, और this will play the role as the pointer that will point your value, जो कि आपके value को point करेगा, and here I pass value. Clear? Now here I am going to check the condition. अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर रहा ट्री का, like this. Okay, this is the hierarchical step. So here I am going to check the condition कि if root equal to null ptr. अगर हमारा ये जो root है, this equal to अगर null ptr हो, and if I try to insert the first element, the first value for this node, so in this case here return new. New is what? This is the keyword that will helps you to create dynamically during the runtime, that will helps you to create a node during the runtime. Okay, so return मुझे क्या चाहिए? अगर null ptr है तो then new node with value that I pass value for this. Clear? Now the next condition will what? If अगर हमारा given value, जो value हमने दिया, okay, this insert for your first for the root node. Okay, now again if value is less than root, that will point your data, जो आपके डेटा को पॉइंट कर रहा है. सो अगर हमारा गिवन वैल्यू लेस होगा रूट वैल्यू से, देन दिस विल शिफ्ट एट द लेफ्ट. ओके, insert left and this will store the value. Otherwise this should be shift at the right position if your given value will greater than your root. आपके रूट पोजीशन से अगर ग्रेटर होगा तो ये शिफ्ट हो जाना चाहिए हमारे राइट नोड पे. क्लियर? So simple. This is the trick by which we can insert element, we can insert value like this. Okay, now inside the main, अब main में हम लोगों को करना क्या है? So at first here I assign our root equal to null ptr. Okay, and now I'm going to insert the node where root equal to insert root and the value will what? 50. Okay, now again simple. Here again I call insert function. To insert the next value again I call insert function.
To insert a next value according to your requirement, you may insert like this. Okay, now at last, return 0. Now, let us start to run this same code. Okay, so here, this is the header file. And node structure simple, here I create a node जो कि हमारा structure type का है, and inside this here I initialize data जो कि हमारा integer type का है, and two pointer types variable here I declared like left and right. Okay, now the next will what, here I would like to create the constructor. So constructor will what, the same name of your class name. So this will node, and inside this here I would like to pass the parameter, so int and value. Okay, now अब ये जो हमने कंस्ट्रक्टर तैयार किया, तो मुझे चाहिए क्या, inside this constructor here that I pass the value as the argument, जो हम value pass करेंगे as the argument that should be stored into the data variable. वो कहाँ जाकर स्टोर होना चाहिए, तो इस डेटा में स्टोर होना चाहिए. सो डेटा इक्वल टू वैल्यू. Okay, now here I am going to assign our left and right. Left and right equal to null ptr. So this is the left and right equal to what? Should be null ptr. So here I assign this null ptr. Okay. Now close this and terminate this class. Okay. Struct. Now the next part will what? Here I would like to insert the elements. So 1 minute, comment insert element. Okay, so for the insertion, again here I would like to use the node. This is the data type, and here I'm going to use the insert function where I would like to pass the parameter. So this is the node and pointer type. दिस इज द वेरिएबल जो कि हमारा पॉइंटर टाइप का है, रूट वेरिएबल. फर्स्ट जो हमारा नोड होगा वो हमारा क्या होगा, रूट वेरिएबल्स होगा. एंड हियर आई वुड लाइक टू पास द वैल्यू जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा, वैल्यू लाइक दिस. ओके, नाउ this is the function, and inside this I am going to check the condition will what, कि if अगर हमारा रूट इक्वल टू नल पीटीआर हो, अगर हमारा रूट इक्वल टू नल पीटीआर हो, सो इन दिस केस रिटर्न, here I'm going to use the new keyword, also helps you to create your new node during the runtime. And this is the node, and here I would like to pass the value. Okay, हमने वैल्यू पास किया. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन विल व्हाट, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन विल व्हाट, दिस फॉर योर रूट नोड. ओके, ये आपका रूट नोड के लिए है. नाउ द इफ अगेन आई चेक द गिवन वैल्यू, अगेन आई यूज द कंडीशन कि इफ योर गिवन वैल्यू इज लेस देन, अगर आपका गिवन वैल्यू लेस देन आपका रूट हो, दैट विल पॉइंट योर वैल्यू, जो कि आपके वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. अगर लेस देन हो, so in that case, 1 minute, yeah, so in that case root should be point your left if value अगर आपका लेस होगा रूट से जो आपके डेटा को पॉइंट कर रहा है, and inside this here insert your root that will point your
left, okay, and the given value that store, okay. Yeah, am I right? Yeah. Now the else case will what? Else, अब अगर आपका गिवन वैल्यू, अगर आपका गिवन वैल्यू ग्रेटर देन रूट हो, that will point your data. So in this case, this root that will point the left, I'm going to copy this and here paste this, okay. So this should be point your right, okay, your right. And here also your root node should be point your right element like this, and the given value that will store, okay. And return your root, okay. Now the next main function. So int main, here I'm not going to use the traversing. In my next video I would like to make you understand about traversing, जहां हम तीन जो traversing का method है, in order traversing, pre order traversing and post order traversing. So तीनों मेथड को हम थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों वे से समझाना पसंद करेंगे. बट हियर ओनली द इंसर्शन प्रोसेस. यहाँ पे हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं. सो सिंपल, इनसाइड द मेन हियर आई वुड लाइक टू again assign int root equal to what, null ptr. हमारा जो रूट है वो पॉइंट कर रहा है क्या, null ptr को. एंड फॉर द इंसर्शन, okay, here the insertion purpose, at first root, जहां मैं रूट को असाइन कर रही हूं insert, and here I would like to pass the parameter root and the value that you try to print, okay, जो आप print करना चाह रहे हो. Again according to our requirement I would like to call this insert again and again. So copy this and paste. How many element do you like to insert? You may simply write like this, okay. So now the next element 10, sorry, 100, 40, 90, 80, again 11, and now the next 30, okay. So this is for what, for the insertion. And at last return 0. Now close this, now save this and execute this. Yeah, so you may notice that have not an error. So this insertion that has executed successfully. ये जो हमने insert किया ये हमारा execute हुआ, okay. But how can we traverse this, and how can we print this element after using a in order, post order and pre order? So for this I will discuss about that in my next video. So thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Thank you for watching this.